Yeah, just wait. I'm going to share the screen. So now I think you are able to see the screen. You can respond it like in between yes or no. If you have the network issues, then please let me know. But you can respond yes or no in between if I am just asking you something like. So it will be beneficial for Nina to whether you are here or not. So that's why I am asking it. So if you can confirm it, whether you are able to see the screen or not. So now we are dealing with this chapter, Human Geography, Nature and Scope, right? For the first chapter, first ever chapter. So, so I think it is much more clearer to you, Pallavi. Like Yes sir, I can we able did it see earlier. सब मैं सर देख पा रही हूँ स्क्रीन Yeah, definitely. So here, I think it is clearer to you, human geography, nature and scope, because many of times, I think you have gone through this chapter like earlier, we did revision many of the times. So now I want you to read this particular revision notes so that it will be good for you to learn it here. Easily you can learn it. So first point, if you can go through the first point, that yeah, you can start reading like. Yeah, Pallavi, can you start reading the points, the main points that I have mentioned here? So after which I will ask you MCQs, questions like. So that's why I am explaining you. So here it's the revision portion now The because I chapter have broadly explained you. covered and introduced to the nature of geography. As you know that the geography as a field of study is integrative, empirical, and practical. Thus, the reach of geography is intensive and every in each and every event or phenomenon which varies over space and time can be studied geographically. Yeah, you can stop here. So now moving to the first point that this chapter broadly covers and introduces to the nature of geography. अब इस chapter में हम broadly क्या करेंगे geography के nature के बारे में पढ़ेंगे और उसे ही cover करेंगे कि geography का nature कैसा है, right? So अब जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था जब मैंने आपको first ever ये chapter पढ़ाया था, as you know that the geography as a field of study is integrative, empirical and practical. कि जो geography है एज अ फील्ड ऑफ स्टडीज इंटीग्रेटिव एम्पिरिकल एंड प्रैक्टिकल लाइक हम देखते हैं कि हम आसपास देखते हैं कि जो है हमारी साइंटिफिक जो थिंग्स हैं वो हो रही हैं राइट हम देखते हैं कि साइंस जो है हर चीज में इन्वॉल्व है लाइक जो चीजें हो रही हैं अभी दैट इज रिलेटेड टू साइंस सो यहाँ पे सो ज्योग्राफी एज अ फील्ड ऑफ स्टडी इट इज रिलेटेड टू द साइंटिफिक thing. So thus the reach of geography is extensive and each and every event or phenomenon which varies over space and time can be studied geographically. तो हम देखते हैं कि जो ज्योग्राफी है ये जो रीच है इसकी वो एक्सटेंसिव है और हर एक इवेंट और फेनोमेनन जो कि वेरी करता है ओवर टाइम एंड स्पेस उसे हम यहाँ पे स्टडी करते हैं ज्योग्राफिकली राइट सो मूविंग टू योर थर्ड पॉइंट दैट फिजिकल ज्योग्राफी स्टडीज फिजिकल एनवायरनमेंट अब फिजिकल ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट में आपके क्या आ जाते हैं पल्लवी लाइक योर लैंड वाटर एयर सो ऑल थिंग्स विल बी वी विल स्टडी इन द फिजिकल एनवायरनमेंट और ह्यूमन ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं बिटवीन द फिजिकल नेचुरल मतलब जो भी रिलेशनशिप है फिजिकल या फिर नेचुरल एनवायरनमेंट के बीच में और उनकी रिलेशनशिप किसके साथ है पल्लवी इट्स रिलेटेड टू द ह्यूमन वर्ल्ड सो जैसे कि फिजिकल जो इन्वायरमेंट है उसकी रिलेशनशिप ह्यूमन बींग्स के साथ है क्योंकि ह्यूमन बींग्स भी जो है यहाँ पे रहते हैं हमारी अर्थ पे तो वो एग्जिस्ट करते हैं इसी इन्वायरमेंट में सो उनकी रिलेशनशिप जो है यहाँ पे बताई गई है ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द रिलेशनशिप between the physical natural and the human worlds the spatial distributions of human phenomena so Pallavi do you want to explain this the spatial distributions of human phenomena like because I have given examples in the previous classes, like for this chapter as well. So, what do you mean by the word spatial distribution of human phenomena here? Right. I'm pointing out here because we also have to do MCQs in the last. That's why we need to go in deep. Yeah, Pallavi, you can just think about this particular meaning, the spatial distribution. Like, what do you mean by it? कि जो ह्यूमन फेनोमेना हो रहे हैं लाइक फेनोमेना से क्या मतलब है आपका जो भी
क्या कह सकते हो आप फिनोमिना से, क्या मतलब है? बाय योर ओन अंडरस्टैंडिंग इफ यू कैन डू दिस, सर लाइक कौन सी जगह है? क्या आर यू सेइंग समथिंग पल्लवी? सर मेरे को सर किसका मीनिंग बताना है? The spatial distribution of human phenomena. You have to tell the meaning of this. I'm not able to hear your voice. If you can increase your device voice, like so that I can be able to hear you. So yeah, are you telling Pallavi something? Yeah, you can respond me because yeah. सर स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फिनोमेना सर वो होता है सर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सर सर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है फिनोमेना के बीच सर जो ह्यूमंस का उसको सर स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। या डेफिनेटली। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो भी फेनोमेनाज हो रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में, उसे हम इसमें पढ़ते हैं ह्यूमन फेनोमेनाज की जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और हाउ दे कम अबाउट, लाइक कैसे वो हो रहे हैं, सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस क्या हैं, अलग अलग पार्ट्स में हम जाते हैं पूरे वर्ल्ड को, अगर हम वर्ल्ड के मैप को एनालाइज करते हैं तो उसमें अगर हम अलग अलग पार्ट्स में जाएंगे, अलग अलग कंट्रीज को देखते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। So now the last point दिया हुआ है यहाँ पे कि that human geography studies the interrelationship between the physical environment and socio-cultural environment. तो जो ह्यूमन ज्योग्राफी है इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इंटर रिलेशनशिप को पढ़ते हैं। राइट, इंटर रिलेशनशिप मतलब क्या होता है कि फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में जो भी इंटर रिलेशनशिप है, और सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट क्या है पल्लवी? इट्स द आवर ओन सोसाइटी दैट विच इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स, जो कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनी गई है थ्रू म्यूचुअल इंटरेक्शन विद ईच अदर। So now if you will look at this, are you able to read this, like so that you can be able to revise in such a manner, because these are not the direct, yeah. सर आई हैव टू रीड। Yeah, you can read it सर फ्रॉम वेयर? from the ओके starting सर। point. Human beings interact with their physical environment with the help of technology. Technology indicates the level of culture development of the society. Human beings were able to develop technology after they developed better understanding of natural laws. The knowledge about nature is extremely important to develop technically, and technology loosens the shackles of environment on human beings. In the early stage of their interaction with their natural environment, humans are greatly influenced by it. This type of interaction between primitive human society and the strong forces of nature was termed as Yeah, so environmental you can stop determinism. here, Pallavi. It's till environmental determinism. So now I want to ask you, just can you explain that the meaning environmental determinism, like if you can explain it, that because yeah, in your own language you can explain it. No need to speak. Uh, yeah, Yes, sir. yeah. Do you want to explain it, Pallavi? The सर environmental एनवायरमेंटल determinism. डिटर्मिनिज्म वो होता है सर जो इंटरेक्शन होता है सर नेचुरली इन्वायरमेंट से, और सर जिससे सर ह्यूमन सर ग्रेटली इन्फ्लुएंस होता है बिटवीन सर प्रिमिटिव सोसाइटी और सर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के लिए। सर उसको बोलते हैं सर Yeah, एनवायरमेंटल definitely. डिटर्मिनिज्म। सो हम इसमें ये कह सकते हैं, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या है, मतलब कि जैसे अगर हम अर्लियर एंशियंट टाइम की बात करते हैं तो उसमें ह्यूमन बीइंग्स जो थे वो इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे, लाइक उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो हम देखते हैं कि उन्हें जो है प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ती थी, लाइक तो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, तो वो नेचर पे एक तरह से क्या थे, डिपेंडेंट थे। तो ये जो इंटरेक्शन था, दिस टाइप ऑफ इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ देयर इंटरेक्शन विद देयर natural environment, humans were greatly influenced by it. So this type of interaction between primitive human society and the strong forces of nature was termed as environmental determinism. तो ये जो interaction होता है primitive human society के बीच में और जो strong forces of nature है, तो उन्हें हम environmental determinism यहाँ पे कहेंगे। और यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे
So there is direct dependence of human beings on nature for resources which sustain them. So the physical environment for such societies becomes the mother's nature. So can you explain this fourth point, fifth point if you can? There is a direct dependence of human beings on nature of resources which sustain them. The physical environment of such societies become the mother nature. Yeah. So what it's trying to convey? मतलब एक तरह से हम क्या कह सकते हैं पल्लवी इसमें कि ह्यूमन बींग्स का क्या है, डायरेक्ट डिपेंडेंस है नेचर पे, लाइक जो भी हम रिसोर्सेज हमें चाहिए होते हैं, जो भी रिसोर्सेज हम या आर यू स्पीकिंग, No, sir. आर यू डू यू वांट टू एक्सप्लेन दिस मीनिंग दिस स्टेटमेंट लाइक? नो सर, नो सर, सर आप जी से एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देयर इज डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन नेचर फॉर रिसोर्सेज। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स का यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट डिपेंडेंस है नेचर पे। मतलब ह्यूमन बींग्स जो है वो नेचर पे डिपेंडेंट है रिसोर्सेज के लिए, क्योंकि उन्हें नेचर से क्या मिलते हैं, रिसोर्सेज मिलते हैं विच सस्टेन दैम, जिससे कि वो जो है उन्हें क्या कर सकते हैं, लाइक जो कि उनकी लाइवलीहुड्स को पूरा करते हैं। जो भी हमें रिसोर्सेज मिलते हैं वो हमें नेचर से मिलते हैं, जिससे कि हम अपने लाइवलीहुड्स को पूरा करते हैं। सो द फिजिकल एनवायरनमेंट फॉर सच सोसाइटीज बिकम्स द मदर्स नेचर। तो जो फिजिकल एनवायरनमेंट है इन सभी सोसाइटीज के लिए, वो यहाँ पे क्या बन जाता है, मदर्स नेचर बन गया यहाँ पे। सो विथ सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, तो सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट के साथ हम देखते हैं कि जो ह्यूमंस हैं वो क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, बहुत अच्छे से वो डेवलप हो रहे हैं और ज़्यादा एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यहाँ पे डेवलप कर पा रहे हैं। सो दे मूव फ्रॉम अ स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू अ स्टेट ऑफ फ्रीडम। तो वो एक स्टेट ऑफ नेसेसिटी से स्टेट ऑफ फ्रीडम तक जो है, एक तरह से हम क्या करते हैं, मूव करते हैं फ्रॉम अ स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू अ स्टेट ऑफ फ्रीडम। So I have completed these slides, like I have prepared these slides. So now I am going to prepare the fourth one slide. So I'm just going to the book, like from which I have taken the main points. Like, so I will also ask you MCQs, some MCQs, Pallavi, from you, like if after the completion of this chapter, so that it will be easier for you to revise it. Because we are now having today is 30, like so we are now having only 8 days, like so it at every day if you will give only half an hour, like for this particular tuition, so in every half hour we will revise the ppts in the form of ppt, and we I will ask you some questions, so that will we will prepare as in a very good manner, like so it's my strategy. So just wait for a minute, if it will open, like it's taking a time. I don't know why it's taking time. Net is working properly. Yeah, so Pallavi, are you able to see the screen now, right now on your screen? Yeah, so we are at this point, like just wait. So we are at yeah, we are at this point, like just wait. So here in the third point, we are with social and cultural development, humans develop better, and yeah, in this particular point.
So do you want to read this point particularly, or do you want to explain this point, like is this one, Pallavi? If you can do this right now, so it will be good for me. Like I have highlighted it, so you can read it and just try to explain me what it is trying to say. Like they create possibilities, it's from the same thing. Yes, sir. They create possibilities with the resources obtained from the environment. The human activities create cultural landscape. The imprints of human activities are create everywhere. Health resorts on highlights, huge urban spalls, field, orchards, and pastures in plains Pastures in plains and and rolling hills, ports on the coasts, ocean's root, and the ocean's surface and satellite in the space. The earlier scholar termed this as possibilism. yeah. So what do you think about this particular statement? Like, so are you able to explain it, Pallavi, or I'm going to explain it? I think you are busy somewhere, that's why you are taking so much time to respond it here. So I suggest you to please focus on that, like because your exam is coming nearer, so you don't have to just सर आप जी मेरे को समझा दीजिए. yeah. So they create possibilities with the resources obtained from the environment. So जैसे कि हमने बताया कि ह्यूमंस जो हैं वो क्या करते हैं, पॉसिबिलिटीज यहाँ पे क्रिएट करते हैं, रिसोर्सेज जो भी उन्हें एनवायरनमेंट से रिसोर्सेज मिलते हैं, लाइक सो जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, लाइक तो ह्यूमन एक्टिविटीज हम देखते हैं उससे एक कल्चरल लैंडस्केप बन जाता है. लाइक अगर हम कोई भी अब इंडिया में है, तो इंडिया में हमें अलग अलग स्टेट्स देखने को मिलते हैं, तो हम देखेंगे कि अलग अलग स्टेट्स की जो है अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज है, राइट. सो द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज आर क्रिएटेड एवरीवेयर. सो जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, जो इम्प्रिंट्स हैं, लाइक हर स्टेट में जो एक्टिविटीज होती हैं वो यहाँ पे बेसिकली हेल्थ रिजॉर्ट्स ऑन हाईलैंड्स, ह्यूज अर्बन स्प्रॉल्स, फील्ड्स orchards and pastures in plains and rolling hills, ports on the coast, oceanic routes on the oceanic surface, and satellites in the space. The earlier scholars termed this as possibilism. सो जो स्कॉलर्स थे पहले, उन्होंने इसे पॉसिबिलिज्म जो है यहाँ पे नाम दिया था, इसे पर्टिकुलर जो है इस स्टेटमेंट को. सो नाउ मूविंग टू दिस पॉइंट, nature provides opportunities and human beings make use of these, like, and slowly gets nature gets humanized. So Pallavi, what do you think about this particular statement? Like nature जो है वो opportunities provide करता है, और human beings क्या करते हैं, उन opportunities का use करते हैं, और slowly क्या हो जाता है, nature जो है वो human beings के रूप में ढलने लग जाता है. मतलब nature जो है human beings जैसा चाहेंगे वैसा ही जो है nature वो बना सकते हैं, like, और starts bearing the imprints of human endeavor. तो उससे क्या होगा, जो भी ह्यूमन बींग्स जो है, मतलब जो भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आ रही हैं, तो उसमें जो है हेल्पफुल हेल्प रहेगी. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, लाइक जोग्राफर ग्रिफिथ टेलर. सो डू यू नो अबाउट जोग्राफर ग्रिफिथ टेलर? लाइक he introduced the uh, he introduced another concept. So do you know about another concept rather than possibilism and determinism? Like, what is that? What is the another concept which is called madhyam mark? जिसे मध्यम मार्ग बताया था ग्रिफिथ टेलर ने, between the two ideas of environmental determinism and possibilism. दो आइडियाज के बीच में, like environmental determinism और possibilism के बीच में, तो he termed it as a neo determinism. Neo-determinism. या तो Stop or उन्होंने इसे, go movement. या तो उन्होंने नियो डिटर्मिनिज्म बताया था, या फिर स्टॉप और गो डिटर्मिनिज्म इसे कहते हैं, टू नेम्स हैं इसके. सो द कॉन्सेप्ट, अब इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़ते हैं, दैट द कॉन्सेप्ट शोज दैट नाइदर इज देयर अ सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी. लाइक हम देखते हैं कि या तो, मतलब इसमें ना तो एब्सोल्यूट एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है, लाइक कि जो ह्यूमन बींग्स, नेचर जो है वो डोमिनेंट है ह्यूमन बींग्स पे, ये वो सिचुएशन भी नहीं है. और ये दूसरी सिचुएशन भी नहीं है जिसमें कि एक एब्सोल्यूट फ्रीडम है, मतलब जो ह्यूमन बींग्स है वो नेचर को जो है अपनी तरफ से कुछ भी चेंज कर सकते हैं. तो इसमें क्या है, मतलब कि ह्यूमन बींग्स जो है
कैन कन्क्वर नेचर, मतलब नेचर को जो है ह्यूमन बींग्स काबू कर सकते हैं, लेकिन उसको ओबे करके नेचर को। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बींग्स ने नेचर भी जो है वो भारी पड़ सकता है ह्यूमन बींग्स पे, कहने का मतलब ये है इसमें नियो डिटर्मिनिज्म में। ऐसा नहीं है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो टेक्नोलॉजी जो है एडवांसमेंट हो रही है, इतना टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस कर रहे हैं जो है। अब हम देखते हैं कि बहुत स्टेट्स में जो है बहुत सारी ट्रीज काट दिए, तो ऑक्सीजन की कमी है, तो मतलब क्या होगा, जो नेचर है वो हार्मफुल है फॉर आवर्स एज वेल। लाइक हम देखते हैं कहीं पे कि अगर हम माउंटेनियस एरियाज पे जाते हैं, हम देखते हैं वहाँ लैंडस्लाइड्स हो रही है। लाइक सो दीज आर द डिजास्ट्रस थिंग्स दैट नेचर इज, मतलब कहने का मतलब है कि जो नेचर है वो भारी पड़ सकता है। सो ह्यूमन बींग्स को क्या करना पड़ेगा, नेचर को कन्क्वर करना पड़ेगा बाय ओबेइंग इट। So you have to just mark these point. It is important, Pallavi. So you can take the screenshot or just read this. Like the concept shows that neither is there a absolute necessity or nor is there a condition of absolute freedom. It means that human beings can conquer nature by obeying it. So it means, Pallavi, can you understand this? It means that possibilities can be created within the limits which do not damage the environment, and there is no free run without accident. मतलब जो पॉसिबिलिटीज है वो कैसे बन रही है, यहाँ पे लिमिट्स में हमें पॉसिबिलिटीज बनानी है, राइट। हमें कोई चीज को कॉन्टिन्यूस नहीं रखना है जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज ना पहुंचे। और देयर इज नो फ्री रन विदाउट एक्सीडेंट, इट इज वन ऑफ द स्टेटमेंट, सो यू नीड टू एनालाइज इट। लाइक you can go through this particular statement. Just wait, I'm just muted it for some time because there are some background noises which will come. Pallavi, please prepare for the question answers round from this chapter, because I'm going to ask you at least 50 to 60 questions, like which will definitely be come in your exam line. So when you will ask? Yeah, what are you saying, Pallavi? सर जो एमसीक्यूज के क्वेश्चन है सर, आप जी सर आज ही पूछोगे क्या? Yeah, I will do it today. I will ask you today. Do you have any issues, like you have to go somewhere, or have any connectivity issues, like, or so that, because it's the Pallavi, I have to revise you all the chapters. That's why uh, I have to do the same thing till 7 days, like before your ओके ओके सर, exam. ओके सर, ओके सर। Okay. Wait, I'm going through the, like, I'm this one. Just wait. So here we are this one, the free run. So I am explaining you about the free run. So what is free run? So the free run which the developed economies which the developed economies attempted to take has already resulted in the greenhouse effect. हम देखते हैं developed economies जो हैं वो हम देखते हैं उसमें फ्री रन हो रहा है, मतलब कोई भी नेचर को ध्यान में रख के कोई फैसले लिए ही नहीं जा रहे। उससे क्या असर हो रहा है, उससे हम देखते हैं कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया आपका, ग्रीन हाउस इफेक्ट आई थिंक यू नो पल्लवी, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, रिसीडिंग ग्लेशियर्स एंड डिग्रेडिंग लैंड्स। सो द प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन, so the process of adaptation here and adjustment with and modification of the environment started with the appearance of human beings over the surface of the earth in different ecological niches. तो जो प्रोसेस है एक तरह से अडेप्ट होने का, एडजस्टमेंट होना, मतलब एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनके साथ हमें एडजस्ट होना चाहिए। तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है, विद द अपीयरेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। लाइक ह्यूमन बींग्स जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं इन सब चीज़ों को ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ इन डिफरेंट इकोलॉजिकल निकेस, मतलब हम देखते हैं अलग अलग इकोलॉजिकल जो जोन्स हैं, लाइक हम उसमें देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो है वो एडजस्ट हो रहे हैं एनवायरनमेंट के साथ। So thus if we imagine the beginning of human geography, it has its roots deep in history. अगर हम ह्यूमन ज्योग्राफी की शुरुआत देखते हैं यहाँ पे, तो हम देखेंगे कि इसका इंटरेक्शन कब हुआ, मतलब if we imagine the beginning of human geography with the interaction of environment and human beings, it has its roots deep in history। मतलब human geography का interaction कैसे हुआ environment के साथ और फिर human beings के साथ, तो इसका हम history आपको, you can imagine, you can browse on that, like how the human geography has been started, कैसे जो है वो start हुई और कैसे उसका interaction हुआ environment और human beings के साथ। like
So welfare or humanistic school of thought. So in human geography was mainly concerned with different aspects of social well-being of the people. जो welfare और humanistic school of thought है. So this question will also be going to ask in your exam, like welfare or humanistic school of thought was mainly concerned with the different aspects of social well-being of the people. Now, radical school of thought. What is radical school of thought, Pallavi? Radical school of thought employed Marxian theory to explain the basic cause of poverty, deprivation, and the social inequality. Now, behavioral school of thought. You need to remember these schools of thought, Pallavi. First, welfare or humanistic school. Third, radical. Second, radical. Third, behavioral school of thought. So, can you read this behavioral school of thought? Like, can you read this behavioral school of thought, Pallavi? Are you there? Yes, sir. Yeah, please read this. Behavioral school of thoughts laid great emphasis on life experience and also on the perception of space by social category based on ethnicity, race, and religion, etc. या सो बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट में हम देखते हैं कि जो ग्रेट एम्फेसिस है वो लाइव एक्सपीरियंस पे है और कैसे जो है हम देखते हैं सोशल कैटेगरीज पे जो बेस्ड है लाइक बेस्ड ऑन एथनिसिटी रेस एंड रिलीजन. So now human geography assumes a highly interdisciplinary nature. It develops close interface with other sister disciplines. I think in your book all the sister disciplines have been given in last of the chapter, Pallavi. So you can go and read this or just remember these because these are important ones. So it will be asked in your exam that which one of the following is which one of the branch of geography. So I'm going to ask you some MCQ question. So you will definitely be able to understand from this. Like, so know the terms. You have to know the terms like human geography. What is human geography? I think you know it. It's the study of interrelationship between the physical environment and socio-cultural environment created by human beings through mutual interaction with each other. So now physical environment, it is the part of human environment that includes, we can say that includes purely physical factors like such as your soil, जिसमें आपका soil आ गया, climate आ गया, water आ गया, etc. और एरोडायनामिक्स में हम क्या पढ़ेंगे पल्लवी? इट इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज लाइक ऑफ मूविंग एयर. मतलब हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज लाइक हाउ एयर इज मूविंग बिटवीन एंड इंटरेक्शन बिटवीन द एयर एंड सॉलिड बॉडीज and moving through it. So Pallavi, do you want some time? I want to take your test for I will ask you some MCQs like. So you don't need to see the you don't need to see just answers. You have to just uh, op- write down the answers like. Okay, sir. So do you want to take some time for No, sir. okay, so I'm Sir, just going wait. to ask. Yeah, just wait, Pallavi. I'm going to just take your test right now for human geography. It's not a test, you have to attempt all the questions like. So I'm just stop presenting my screen and then we'll get back in a minute. So be prepared for the test like. The chapter is clearer to you now, fully revised or any issues. You can go through the just go through the NCRT book once again if you have any doubt. Like because from my side now I have completely revised you first chapter. So any issues?
So Pallavi, have you gone through the chapter? Like, have you read line to line in the book of NCRT? Like, please confirm and respond. Yes, sir. Okay. So I'm just going to share the screen and I will give you a test, online test. So yeah, so I'm going to share the screen and I will ask you some questions from sharing the screen. Like, yeah. So now are you able to hear the screen? So Pallavi, just do this question fastly because you have read this and tell me answer that I can opt out. Which one of the following statement does not describe geography? Your time is going on. Just do this. Which one of the following statement does not describe geography? A. Time due to development of technology. B. An integrative discipline. C. Subjected to dualism. And D. Study of the interrelationship between humans and environment. So what will be the answer, Pallavi? Please do it fast. Yeah, are you doing it? Sir, A. Okay, so I am marking A. Now moving to the next one. I am submitting it. Yeah, it's correct. Well done. It's correct. Now, which one of the following is not a source of geographical information? Do it fast. Sir, A. Sample of. नहीं 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 नहीं. Yeah, take your time and hope the right answer. So we will also doing the time practice here, like how much time you are taking in one question. Like you have taken 30 seconds till now for this question. It's 32 seconds, 33. Just take see the time at Sir, how many Asian seconds you are Typics. taking. Sir, C. It's C, ancient epics. Okay. सर शायद से गलत हो रहा है. So this one is also correct. Well done, Pallavi. Now, third one. Which one of the following is the most important factor in the interaction between people and the environment? What will be the answer? Sir, Technology, B. Okay, just wait and we will see the responses. Yeah, well done, Pallavi. It's excellent work you are doing. So now moving to third, which is not a fact, like global warming is due to greenhouse effect. Ozone layer is depleted due to primitive agriculture, and land has been degraded due to pollution, and pollution is caused due to industrial development. Yeah, what will be the right answer here, Pallavi? Yeah, you are in confusion. Like you have taken 38 seconds for this question. सर एक्चुअली सर मेरा नेटवर्क कनेक्शन चला गया था सर 2 मिनट वेट करिए. Yeah, so you can दैट इज do नॉट it अफेक्ट. if you have now connected well. Like, ग्रीन हाउस इफेक्ट डिप्लीशन to the chemical pollution. so सर Pallavi, बी. are you doing it? Like, सर बी. ozone layer is depleted due to primitive agriculture. Okay, so I'm just going to submit it. Yeah, it's also correct. So ozone layer is depleted due to primitive agriculture. Well done. So who proposed the concept of neo-determinism? It's a very simple ग्रिफिन question. टेलर सर ए. Yeah. So here it's also I think correct. Well done. So now which subject is called mother of discipline? These questions are सर tricky. Yeah. मदर डिसिप्लिन सर ज्योग्राफी. Just wait. So गलत है it's पता also नहीं क्यों. correct. Well done. So now moving to next. Which one of the following is not a subject matter of human geography? Right.
What will be the right option here? Like, So economic is not a subjective matter. yeah, So it's physical geography. okay. Just wait. So I'm going to submit it, and गलत है yeah, हम्म, definitely. Well done, Pallavi. So now, which of the following is not studied under economic geography? economic Geography of geography, resources, historic resources, geography, geography of agriculture, agriculture, and geography of industries. What will be the right so answer? historic geography, सभी. Yeah, just wait. So now, next question. Correct. It's also correct. Well done. So there are many of MCQs. It's a practice, like 100 MCQs. I think Of the it's there. So following which of the is following is not associated with social geography? I think you will answer each and every question correctly. So which of the following so is not geography of associated with? tourism, so D. Just wait. So going to submit it. Yeah, it's also correct. Well done. So which one of the following is not an approach in human geography, Pallavi? What will be the right answer here? Is not an approach. Like, you know the approaches now? Yeah, are you able to answer it, Pallavi? Like, Yes, sir. or you have just Which of the following is 28, not an 29 approach of seconds. Like, so wait. So qualitative revolution, it's so quantitative, B. right? Yes, a quantitative. Yeah, so here, yeah, it's also correct. Well done. So here, explanation is also they have given that laws of physics were often applied to map and analyze human phenomena. So you can see this. So now, which of the following concept is associated with Griffith Taylor? I think it's too easy So question. Like, neo-determinism, so B. yeah. So here it's yeah, it's also correct. So now Radjal was a propagator of dash philosophy. Radjal, That there is a propagation of so determinism. just wait. नहीं सर गलत कर दिए. Yeah, बहुत it's खराब also है. correct. Well done, Pallavi. So now Paul Vidal is associated with, like what will be the right answer here? So I think it's also a simple question. Paul Vidan. Sir, it's possibilism. Just शायद. wait. Sir, I'm not confirmed. So can I mark it? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, it's also correct. Well done, Pallavi. So now I think we don't have enough questions, like, or should we have to go? Yeah, Pallavi, well done because you have attempted all of the questions correctly, and is it's not having enough questions. So I will come towards one more practice. We have another test like um, yeah, we can do the test paper 3. Like we can analyze it. Yeah. So Pallavi, what do you think? Which element is called Mother Nature here? Like, what is that? Like, which element is called Mother Nature? You can write the options because it's not having the direct MCQs. So just I'm going to see it whether we have online quizzes, like, so that we can go through the online quizzes. So practice we have done 13 out of 13, like, or they have different questions once again. So we have do this na Pallavi, like Yes, sir. this question earlier. Okay. So here I think we don't have any enough mock test, but these are the CBSE test papers that I'm going to. You have to attempt these test papers. Like you can attempt question 3. Like I'm sharing the screen in front of you, or I can download this paper. So Uh, yeah. So this one you have to attempt. Like you can do start writing.
Sir, Which B. element is called mother nature? Or we can match it here if after your completion right now. So are you doing it, Pallavi? Like, you can respond me. Yes. Okay, just do it. Or tell me to just scroll down the screen like. Sir, scroll down the screen. Yeah, okay. So fifth one, I have to put this like, or this one. Because if you will attempt this particular test, so I think we it's a 3 mark question which will definitely come in your exam. So I will also explain you syllabus once again today. So 3 marks question in your board exam. Total 3 MCQs will come in from this chapter. And for world population, This one is for all only. the other chapters, we also do with the same strategies. Like, so it's the final revision that we are doing. So we have to do it with full preparation for your exam. So you need to also give your 100% here. Have you done it, Pallavi? So wait. Sir, scroll down the screen. Yeah, definitely. So here the ninth one. Can I scroll down more? Yes, sir. So after the paper, you can send me the picture, like pic, and you can speak whenever I will show the answer sheet of this test. You have to speak the question number one, like question number one. So you have to speak the answer that you have written. So firstly, you have to send me the answers that you are going to write on your notebook. Can I scroll down it, Pallavi? Yeah, are you there in the call or just? Yes, sir, scroll down. Yeah, can I scroll down, Pallavi? Yes, sir. Yes, sir. Just wait. So here, yeah, so these are the assertion conditions like from 12 to 16. Gives a more impact to the physical environment.
Beautiful aluminum roll of but even cells. So can I also scroll down it, Pallavi? Like if you have done it. Yeah, so I'm scrolling down it. Sir, please wait. Yeah, you can read this particular source case, and you have to answer any three questions. Like सर मेरे you से don't अभी need ऊपर to के answer. क्वेश्चंस नहीं हुए. Yeah, just wait. Yes, sir, please scroll down. Yeah, what are you saying, Pallavi? Sir, please scroll down the screen. Yeah, just wait. Sir, wait. Yeah, Sir, bus. and you have to answer any three questions from this particular case study. So should I scroll down the screen, Pallavi, if you have read this Yes, sir. paragraph? Yes, sir. Like, Yes, sir. yeah, so this one, you have to do these four questions. Like, any three you have to do.
Have you done it, Pallavi? No, sir. सर सर नीचे करिए सर स्क्रीन को. Yeah, there are no like सर मतलब सर ऊपर करिए, सर ऊपर करिए. just wait. Yeah. So should I scroll more यस above? सर, और करिए सर. सर वेट. यस सर, नीचे कर दीजिए. Okay. Yeah. यस सर, डन. Okay. So Pallavi, you can do one thing. You can just share me the answers. Like you can just share me a pic of answers that you have opted out. So we will match it here. So I will show you the answer sheet of this particular test. So you can match it here by seeing your answers. But first you have to send me the pic so that I can see that you are telling me the right answers that you have written. So that's why. So Pallavi, are you doing the sharing me the pic like? यस सर, प्लीज वेट. Okay. I'm waiting, Pallavi. सर आई एम सेंडिंग. So Pallavi, are you sharing the answers like? Because it's not. I think it's not too much time taking. Like you can send the pic here for the answers on my WhatsApp number, like so that I can see that what answers have you written, and सर आई हैव सेंडेड. yeah. So I am downloading it. Just wait. It takes time to download it. So here you have done 20. You have done all the questions, Pallavi. In the last four questions, you have three choices. Like so, you have so nice if you have attempted for all the questions. So now we will go to the answer sheet of this particular test. So here the first is B, physical environment. Right. So here you will get 1 mark. So I'm giving you 1 mark. Now moving to the next, that second is B. It's Romans. It's also correct. Well done, Pallavi.
Third one is B, Griffith Taylor. It's also correct. 3 marks. You now you got till now 3 marks. Now fourth is B, climate. It's also correct. Uh, Fourth one is also correct. Well done. Now fifth one is C. Like you have opted C and the correct answer is B, Griffith Taylor. So here it's wrong answer, Pallavi. Fifth, the answer of B is fifth is B. Like just we go to the question and then check what will be the सर question. एक्चुअली सर मेरी सर सीरियस प्रॉब्लम ये है कि सर जब मैं जल्दबाजी में होती तो फिर सर जो मेरे को आंसर पता होते सर मैं वो भी गलत करके आ जाती हूँ सर, इसलिए मैं Yeah, जल्दबाजी में क्वेश्चंस नहीं करती सर। बट yeah. मेरे ऊपर सर मेरे को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि सर जब पेपर आएगा तो फिर सर मैं नॉर्मली क्वेश्चन सर आराम आराम से करूंगी, बट सर मैं सही करके आऊंगी। Yeah, definitely. So that you should take your time. Like if you are taking 20 to 30 seconds, like for one question, that is good. Like you are doing in a right way. So who coined determinism? It is the fifth question. So the answer should be here Griffith Taylor. But here you have opted Ratzel. Like so here they have given the answer. So can you check it from your book, Pallavi, that the correct answer uh, is Griffith Taylor? I think new determinism, the term determinism has been coined by Griffith Taylor. If I am not sure, I think because sometimes they are also given the wrong solution. कई बार wrong solution भी दे देते हैं इनका, कई बार पता नहीं होता है आंसर्स में. सर बुक में गिवन नहीं है। Yeah, so I think इसमें जो है वो सही दिया हुआ होगा क्वेश्चन. Like so it's so we can like yeah. So if you uh, so here you have opted Ratzel. So it's wrong. Your 1 mark is here missed. Like so now if we will move to the sixth one, like A, geography of tourism, it is also correct. Well done. And seventh is D. Like it's also correct, Pallavi. Well done. Eighth is A. It's also correct. Man is a passive agent. It's well done. Ninth is also A. It's also correct. Well done. And tenth is B. It's also correct. Well done. 11th is B. It's also correct. So 12th is so 12th you have marked 12th it's A. Like so it's wrong. I think it's wrong, Pallavi. The correct answer is here B. So you have now 2 marks that have been so at 12th question now. So just wait. Yeah. So the 12th question was that physical environment has been modified by human beings and human lives are more impacted by modification in the physical environment. And you have opted both assertion and reason are true. And R is the correct explanation of A. लाइक इसमें बताया गया है कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो मॉडिफाई किया गया है ह्यूमन बींग्स के द्वारा और रीजन उन्होंने दिया हुआ है कि जो ह्यूमन लाइफ्स हैं दीज आर मोर इम्पैक्टेड बाय मॉडिफिकेशन इन द फिजिकल एनवायरनमेंट. बट हेयर यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए वो होना चाहिए लाइक वो होना चाहिए आपका कि बोथ असर्शन और रीजन यहाँ पे आपके ट्रू है. पल्लवी सी दिस क्वेश्चन यू हैव रॉन्गली आंसर्ड. बोथ असर्शन रीजन यहाँ पे आपके ट्रू है लेकिन आर यहाँ पे रीजन इट्स नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है इसमें कि ह्यूमन बींग्स हैव क्रिएटेड एलिमेंट्स फॉर देयर कन्वीनियंस थ्रू देयर एक्टिविटीज. लाइक ह्यूमन बींग्स ने क्या है एलिमेंट्स बनाए बनाए बना चुके हैं. ह्यूमन बींग्स क्या एलिमेंट्स बना चुके हैं उनकी कन्वीनियंस के लिए क्योंकि जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट का यूज करके उसे हम मॉडिफिकेशन कहते हैं. राइट फिजिकल एनवायरनमेंट में जो भी मॉडिफिकेशन हो रहा है फिजिकल एनवायरनमेंट को मॉडिफिकेशन हम क्यों कहेंगे जो भी ह्यूमन बींग्स ने बनाया है लाइक हाउसेस बनाए हैं विलेजेस सिटीज रोड रेल नेटवर्क्स. पल्लवी आर यू गोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर लाइन what you have यस done सर। mistake. So here so all other elements of material culture these have been created by human beings using the resources provided by the physical environment. जबकि जो physical environment है these are it has been greatly modified by human beings. So it has also in turn impacted human lives. So now आपका 13th में आपने C लगाया है ऑप्शन. So 13th is also wrong पल्लवी. 13th का आंसर यहाँ पे जो है B है. 13th का आंसर B है because
यहाँ पे जो है assertion और reason दोनों ट्रू हैं, लेकिन आर यहाँ पे रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है assertion का। क्यों नहीं है? क्योंकि हम देखते हैं अर्ली स्टेजेस में जो है इंटरेक्शन है एनवायरनमेंट के साथ, ह्यूमन बींग्स जो है वो इंटरेक्ट करते हैं प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी के साथ। और क्वेश्चन क्या था आपका यहाँ पे 13th में क्वेश्चन दिया हुआ है नेचर प्लेड अ डोमिनेंट रोल ओवर ह्यूमंस, एंड रीजन इसमें दिया हुआ है कि ह्यूमन बींग्स अडेप्टेड टू द डिक्टेट्स ऑफ नेचर। जो नेचर है वो एक डोमिनेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है ह्यूमन बींग्स के ऊपर, और ह्यूमन बींग्स जो है वो अडेप्टेड हो जाते हैं जो भी नेचर उन्हें डिक्टेट करता है राइट। सो यहाँ पे आपने ऑप्ट किया है 13th क्वेश्चन में सर इट्स सी। सी, दैट assertion यहाँ पे ट्रू है, बट यहाँ पे जो रीजन है वो फॉल्स है। लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन होना चाहिए बी, यहाँ पे जो दोनों assertion और रीजन है दोनों ट्रू है, और रीजन जो है यहाँ पे रीजन अगर आप देखते हो वो यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है अभी क्यों है ऐसा। क्योंकि अर्ली स्टेजेस में अगर हम देखते हैं ह्यूमन बींग्स जो थे वो इंटरेक्ट करते थे इन्वायरमेंट के साथ प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी की मदद से, राइट। सो इसलिए नेचर एक डोमिनेंट रोल प्ले करता था ह्यूमंस पे, लेकिन ह्यूमन बींग्स ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड हुए नेचर से ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड होते थे और अडेप्ट होने लगे फिर नेचर्स के डिक्टेट्स में। एंड 14th आपका हो गया सी। 14th इज करेक्ट पल्लवी, वेल डन। 15th is A. 15th is not B, it's A. So you have done 15th also wrong question. So here I want to explain you this question also. So here 15th question, what was 15th question? 15th question is that technology indicates the level of cultural development of society. It's assertion कि जो टेक्नोलॉजी है वो कल्चरल डेवलपमेंट के लेवल को इंडिकेट करती है सोसाइटी के। और एज अ रीजन क्या दिया हुआ है कि ह्यूमन बींग्स टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग द लॉज ऑफ नेचर। नेचर के लॉज को समझ के जो है ह्यूमन बींग्स टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे। और आपने इसके ऑप्शन में डाला है ए, वो assertion और रीजन यहाँ पे दोनों ट्रू है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। और यहाँ पे जो ऑप्शन होना चाहिए आपका वो होना चाहिए, ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए बी, कि assertion और रीजन ट्रू है, लेकिन आर यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिकेट करती है कल्चरल डेवलपमेंट को। तो यहाँ पे नॉलेज हमें पता होनी, एरोडायनामिक्स के बारे में जो नॉलेज है वो फास्टर प्लेन्स डेवलप करने की, और डीएनए और जेनेटिक्स, इससे क्या होता है बहुत सारी जेनेटिक डिसीजेस को ओवरकम करने में मदद मिली, राइट। क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो थे वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें नेचुरल लॉज की जब अंडरस्टैंडिंग हुई तभी तो उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप करना शुरू करी। तो उससे क्या हुआ, जब ग्रेटर यूज हुआ टेक्नोलॉजी का उससे ग्रेटर डेवलपमेंट हुआ सोसाइटी का। So Pallavi, are you able to understand what were your mistakes? Like, so 16th में आपने A लगाया है, 17th में why you left 7th? Okay, you have not done. So 18th D, सर ऑप्शन थे सर, 3 करना था सर कोई। yeah, definitely. So 18th D, 18th का आपका D है, इसमें टेक्नोलॉजी होना चाहिए आपका आंसर, it's wrong. So you have done 4 questions that are सर wrong. मेरे साथ तीनों गलत हैं। Yeah, so 19th में आपका होना चाहिए A, it's also wrong. So why you सर have बट done सर wrong सर questions, पहले Pallavi? सर पहले सर मैंने सर जो 20 वाला क्वेश्चन है सर, मैंने पहले अटेम्प्ट किया था सर, मैंने उसमें डी करा था सर, तब डी भी गलत था सर, अब डी सही है। या नहीं, 19 वाला तो आपका 19 वाला 19 में तो डी होना चाहिए, और 20 वाले में आपका सी होना चाहिए। 20 वाले में आपका डी होना चाहिए और आपने सी ऑप्ट किया हुआ है, तो वो गलत हो गया फिर। सर नहीं सर, पहले भी सर आपने मेरे को एक क्वेश्चन दिया था सर, तब मेरा सर मैंने सर जो डी वाला क्वेश्चन है सर, मैंने उसमें डी ही लगाया था सर, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। तब सर आपने मेरा गलत कर दिया था कि सर ये नहीं है आंसर। बट सर आज ओके, मैंने बट अलग करा है तो फिर सर वो गलत है। so I think I have done it by mistake, but now right now the answer sheets are here among in front of you, so I think these will be the right answers. So right now how many यस questions you सर। have done wrong? Like 2 सर plus मैंने सर 1 कुछ plus जल्दबाजी में भी कर दिए हैं। yeah, fourth, fifth, and sixth. Like 6 questions you have done wrong, Pallavi, if I'm right. Or 5 questions. सर शायद सर 86। Yeah.
So I think you have scored 14 out of 20, but it's a very good thing that you have done. At least you are learning, at least, because uh, you are learning in a very good manner, because I have also asked you some practice questions. So it was amazing, like you are learning in a very good manner. And we will also you don't need to worry about the exam will be very good, so don't worry. So, and about the rest of the chapters, be prepared for rest of the chapters. Nowadays I am little bit free, so I can take your class more than the required time, so that your exam will be going very well. So you can send me the exam after the exam will over, like after it you can send me. So I will also see you. I think you will get the answer sheet within an hour now, like after the exam will over, because uh, answer sheets are now releasing after an hour, like. Yeah, so Pallavi, I think I have taken you a lot of I think we have taken a we have done a lot of from this chapter. I think it's enough. Like you will get a lot of questions, and you will do each and every question from this chapter that we have done till now, right, Pallavi? So you can respond yes or no, or uh, or I am just stopping the session here, or we will meet tomorrow with another chapter. Like we are now in the process of revising chapters. I will not take your mock exam to, so I will revise only the chapters. Okay, Like, okay, sir. okay, I'm closing today's session because I have to Thank go you, sir. somewhere. Okay, bye.